मेरे इस पॉडकास्ट से पहले मैं झगड़ा करके हूँ मेरे फाउंडर से। But when we talk about married to the cause, right, there's another thing that comes with disagreements. Aside disagreements in founders within the company, it's a must that I feel personally because मेरे इस पॉडकास्ट से पहले मैं झगड़ा करके हूँ मेरे फाउंडर से। because without subordination you will not you will not challenge each other's ideas. वो ideas, वो पार्क, वो friction बहुत ज़रूरी होता है. But at the same time, one needs to create a culture where those disagreements can be approached, or they can be heard at least. You cannot switch on your personal ego. You cannot take it. So you can't bring ego within founders, so you can't bring ego. Can't bring ego to. अभी झगड़ के आए हो, right? Let's talk on that. How do you think an early stage startup should manage disagreements? And I'll tell you the reason for that also, because aligned with you, we have a segment in the competition for faculty-led startups, right? So they may be faculty doing a startup by themselves, trying something else themselves, or there'll be a faculty and student coming together as a team creating a startup. Disagreements honi hai. Age is just one factor, but there are so many other things that actually come ideologically. How do you address, or how do you think founders should address? So my learning, I was also very brash when I was young. When I started, I never used to listen to anybody. तो मैं भी बहुत सारा चीज सीखा हूँ. तो ये जो मैं ज्ञान दे सक रहा हूँ, मैं बहुत पिटा हूँ पहले. So I've lost my CTO. When I started, I was 21 or something. That time my CTO was, I believe, 50 plus. His name was Sridhar Iyer. I can name him because I respect him a lot. And I lost him because of this friction itself, because I said, no, this is the way to do it. So the learning इसमें वो है कि, see, like you rightly said, ego can't come to the fore when you discuss. But एक चीज है, if you feel something very strongly about, okay, that applies to what I have also chosen as, like when we had a technology decision, my company's name itself is iWeb because we decided to build on the web. That was our first disagreement, because during 2005, internet connectivity was so poor that nobody will buy a product which runs on the web, and that's what we faced for the first 5 years. Then Geo came into picture and sky is the limit, and stories changed post 13, 14, 15 onwards, right? But till then it was a struggle. People said web पे चलेगा ही नहीं भाई, मैं कैसे करूँ payroll? ये तो इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं आएगा, सिलवासा में नहीं आता है, नासिक नागपुर में इंटरनेट इज पुअर, राइट? बट वी chose that because we knew this was scalable. This is where we don't have to pay on a per license basis. So two things. One, even if there are disagreements, you have to look at the final picture कि हमने ये क्यों बनाया, and always go back to the drawing board with the reason why you started. Why बहुत जरूरी है, ठीक है? तो आप कुछ भी करो, कितना भी डिसएग्रीमेंट करो, कॉज अगर से मिला, like I said, freedom fighter स्वराज, we want freedom, right? Now you get by any cause, you fight, bitter, bad, backstab, whatever, we want freedom. If that is leading you to freedom, stick to that. Second thing, ego can't come into picture, because see, there is nobody right here. Your co-founder might be right, you might be right. It's all about perspective. It's all about how you manage things, and it's easier said than done. Trust me, when you start up now, especially like you said, academicians and a student coming together, बहुत difficult होता है, because I am not against academicians, but honestly they have not seen the world from that lens. उन्होंने इस लेंस से देखा है, वो थियरी में बेटर है, ठीक है, उनको चांस नहीं मिला प्रैक्टिकली करने को. मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूँ. एक टीचर को जाके, ठीक है, खेलने का चांस नहीं मिलता है ना, वो पढ़ा रहा है. तो इवन एक स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर एक लिमिट के बाद नहीं बता सकता है, बिकॉज वो थियरी में पढ़ रहा है, राइट? सो डॉक्टर भी दो टाइप के होते हैं ना, एक कंसल्टेंट होता है, एक सर्जन होता है. कंसल्टेंट ज्ञान देगा, बट एंड में वो बोलेगा आप सर्जन को रेफर करो भाई, क्योंकि सर्जन ने एक्चुअल सर्जरी करी है. तो देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, बट students have to approach this very cautiously. They have to take everything what they understand from the faculty, but they also have to admit the fact that the faculty has never got the opportunity to go and do something outside as a startup, which the student is getting the opportunity. So सुनो सबकी but करो मन की, ये मेरा always thesis था. मुझे भी बहुत सारे mentors मिले थे. सबकी सुन लो, बट एंड में दो चीजें, एक आपको जाके करना है, वो आपको जो इजी लगे, एंड गट फील. आई ऑलवेज बिलीव व्हाट स्टीव जॉब्स कीप्स ऑन सेइंग, somehow the world, the universe, the gut, your gut always knows what is right for you or for your company. So if you are doing it from the heart, always, I have always listened to my gut, and I feel somehow the universe knows what you're good at or where good things will lead to, although it can lead to disagreements, loss of business, lot of things. But मतलब सुनो सबकी,
करो what you feel is right, always ask your gut and keep the ego out. I have burnt fingers miserably. I have lost some really good talent because of thinking I know the everything, and which eventually was always wrong. Even as we talk today, I will also refer my, like, always be open to ideas. I'm not saying you start believing in all of that, but always it gives you another perspective, and always be mindful of competition too. Sometimes the competitors do something better, even you find foolish. And अभी एक just tweet था, viral हुआ था last week from the CEO of Tiny Owl, जिसने एक tweet करा था कि when he started he had like billions of dollars in 2014. There was a small startup which had come up, which was Swiggy in Bangalore. एंड टाइनी हाउस थॉट, यार मेरे पास $1 बिलियन है, ये छोटा एक स्विगी है, वो क्या करेगा, 1 मिलियन उसने रेस किया, मेरे पास 1 बिलियन है, उसको खरीद लूंगा, राइट? बट ही सेड समटाइम्स लिसन टू योर कंपटीशन, because eventually Tiny Owl died in 2018 and Swiggy became so big and took over so many companies. So he was so humble of him to write. So he is from Mumbai, so there was a discussion कि यार मुंबई से क्यों नहीं होता है, तो बोलता है ऐसा थोड़ी है भाई, मैं भी टाइनी आउल हूँ, मैंने बिलियन, ऐसा नहीं है. But then he gave his learning that you have to learn also from competition and you have to be humble. So happens, learning है. For these rough patches. Yes. Yes. Yeah, should be fine. And see, you will fail. There is no secret sauce here. Everybody has failed. Okay, there is no single founder which I know of who will say मेरा first product succeed हुआ है, मैं तुरंत succeed हो गया. मेरे को एक भी ऐसा फाउंडर नहीं पता है who doesn't have sleepless night, जिसके सैलरी डीले हुए, जिसने पैसे नहीं लिए. सबकी जर्नी सिमिलर है. कोई जल्दी सक्सेसफुल होता है, कोई लेट होता है, कोई नहीं भी होता है. ओके, देर इज नो सीक्रेट सॉस, नो गारंटी. I always believe, I keep on telling my mom, she's 76, she's a cancer survivor. I always keep on telling her, Mom, what I have learned in this life as a founder is the clock will always tick, and there is some day when both the clock के arms will come together, and that is your day. Okay, जो founders take right decisions or scale up very quickly when the time is right, will do things correctly and will scale very fast. Those founders who miss that opportunity when the pendulum is in their favor, like the tiny owl guy said, will lose out, but there'll be learnings. So ऐसा कभी नहीं होगा. जो which even Sanjeev Bikhchandani wrote in his book, his first book, I forgot the name, but he wrote that there was Rashmi Bansal. Sorry, Rashmi Bansal had written a book on success and failure. I forgot the name. It was on the IIT grads who started up in way back in 2005, 2006. She had given me a copy, so I very distinctly remember. इसमें संजीव बिखचंदानी की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें उसने लिखा है कि आप जब एक कंपनी बनाओ ना, आप बहुत लकी हो तो 5 साल में सक्सेस हो जाओगे, थोड़े थोड़े लकी तो 10 साल में हो जाओगे. बट अगर एकदम भी अनलकी बट 15 साल टिक गए ना, 15वें साल पे आपने कुछ ना कुछ तो सक्सीड उखाड़ लिया ही होगा. So the game is, Sanjeev wrote this for Naukri. Okay, when I tasted success, I was in my 16th or 17th year of business. That's what he said. Eventually, then they got the funding and they listed. But Sanjeev gave this example कि for first 5 years this is what I did. I saved data. 10th year में मैं ये करता था. But 15वें साल में हमको समझा कि यार ये कर सकते हैं. Naukri.com launch किया and we succeeded. So even if you are most unlucky, sometimes the pendulum will click in your favor. It's like playing cricket. आज नहीं तो कल एक लूज बॉल मिलेगा और आप छक्का मार दोगे, बट तभी आप वो पोजीशन में होने चाहिए, आप छक्का मार सको, और वो छक्का मारोगे, दैट विल बी योर सक्सेस एंड फेलियर. सो स्टिक अराउंड. Everybody has their good and bad. Somebody has it early, somebody has it late. But if you're married to the cause, you will succeed today or tomorrow. I'm damn sure about that. एक ऑनेस्ट फैक्ट मैं रख लूंगा कि इवन एज वी टॉक, आई विल नॉट से आई हैव सक्सीडेड और आई हैव नॉट फेल्ड. वी फेल एवरी सिंगल डे. इट्स लाइक, देखो, फाउंडर्स लाइफ इज लाइक अ फिनिक्स. यू विल डाई डेली, यू विल गेट अ रीबर्थ द नेक्स्ट डे. ओके, there is no formula कि today I am successful, so tomorrow I'll remain successful. And most founders have realized this, right? Who've been in the game for long enough. Uh, देखो, uh, for me, success, failure, both are two sides of the coin. So today I might be very successful, tomorrow I might be a failure. Failure hurts. It's not easy. It's easier said than done. Emotionally, it takes a big turmoil. Your family life will get disturbed in a very, very big way. Okay. My co-founder is my spouse, so I also carry troubles home, which is another big learning for us. But now we are so mature that we've been there, done that, we understand that space. But it's not easy. Okay. And देखो, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, अगर आप कोई एग्जाम में फेल होते हो या मार्क्स कम आते हो तो आप डिप्रेस हो जाओगे. इट्स नॉट इजी, राइट? बिकॉज पीयर कंपटीशन होता है.
सेम बिजनेस में होता है, कंपटीशन से बिजनेस जाएगा, डील चली जाएगी, आपने कोई प्रोडक्ट बना जो फेल जाएगा, या आपकी टीम छोड़ जाएगी, या सैलरी इश्यूज होंगे. Failures is a part and parcel of our daily journey, but the only thing which will motivate a founder, which has motivated most founders, is the vision. So again, today I might be a failure, but I am married to a cause. I am trying to solve a problem, and tomorrow you never know, I might succeed or I might do really well, right? तो इट्स नॉट इजी. ज्ञान देना बहुत इजी है. मेरी फॉर्मूला है, जब वेन एवर आई एम वेरी डाउन, आई डू टू थिंग्स. लाइक मेनी पीपल लिसन टू म्यूजिक, मेनी पीपल डू समथिंग, सम हॉबी, मेनी पीपल स्पेंड टाइम विद फैमिली. एवरीबडी हैज देयर वे टू डील विद डिप्रेशन. My way to deal with depression is very different from 2008. From 2007 I was very active on Twitter. I am still very active on Twitter. I tweet, right? So everybody has their own way. I have the same way. I go the Elon Musk way. I start tweeting. I write around random topics. I write on me, my learnings. I retweet other tweets. बट आई राइट. सो डिसएंगेजमेंट बहुत जरूरी है. मेरा लर्निंग वो है कि जब फेलियर होता है ना, आपको डिसएंगेज करना है, उस चीज से हट जाओ. तभी जैसा हम बचपन में पढ़ते थे, कुछ चीज नहीं आती थी तो मम्मी या टीचर क्या बताती थी, अभी मत पढ़ो, इसको छोड़ दो, दूसरा कुछ पढ़ो, इसको हम बाद में वापस ले लेंगे. आई ऑलवेज फील ऑलवेज डिसएंगेज, because when you come back to that, maybe you will have a better problem, better solution. Even in coding we do that. If we can't solve a problem, आज तो एआई का वर्ल्ड है, तो एआई बहुत सारा कोड इशू ढूंढ लेता है, पर जब हम कोडिंग करते थे तो नहीं चलता था, छोड़ देते थे. सुबह आके फ्रेश देखेंगे. और रात को बहुत लोग रात को काम करते हैं. मैं भी एक नाइट आउल हूँ, मैं ऑलवेज रात को काम करता हूँ, तो मैं रात को पीसफुली वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता, तो हो जाता था. बट इसमें देखो, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है. यू फाइंड व्हाट गिव्स यू सोलास. तो अगर म्यूजिक है, अगर स्पिरिचुअल, बहुत लोग स्पिरिचुअल होते हैं, टेम्पल्स में जाते हैं, ठीक है, वो करो. बुक पढ़ना पसंद है, वो करो. और कोई बाबा का ज्ञान सुनना पसंद है, वो करो. देयर इज नो फॉर्मूला, सीक्रेट सॉस हियर. व्हाटएवर ब्रिंग्स solace or satisfaction to do that. But be mentally prepared that failure, depression is a part of this journey. It is not easy being a founder, trust me. Out of 199 fail at the end of the 10th year. If you take data points, 100 बच्चों ने अगर साथ में शुरू किया है, 10 साल या 5 साल का भी आप डेटा पॉइंट्स उठाओगे, 99 बंद हो चुके होंगे, मर्ज हो चुके होंगे, या नौकरी कर रहे होंगे, तो ये टिकेगा, राइट? सो इट्स नॉट इजी. इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जर्नी. डिप्रेशन, फेलियर्स डेली होंगे. एक ही चीज है, आप वो कॉज को कितने अटैच्ड हो, आपको कितना फील हो रहा है. अगेन फ्रीडम फाइटर्स कम टू द फोर. फ्रीडम फाइटर्स 200 साल हमारे देश में फ्रीडम मूवमेंट चली थी, राइट? 200 साल के बाद सक्सेस मिला. तो 3 पीढ़ी ने तो सक्सेस देखा ही नहीं है ना. उन्होंने वो तो मर गए बेचारे ब्रिटिश राज में, राइट? बट स्टिल दे पास द बैटन एंड इवेंचुअली समबडी सॉ सक्सेस. तो ये ऐसी वाली जर्नी है, ठीक है, जहां डेली नुकसान हो सकता है, लॉस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, गारंटी भी नहीं आप सक्सीड करोगे. बट आर यू मैरिड टू स्वराज? इफ यू वांट स्वराज दैट बैडली, टुडे और टुमारो यू विल सक्सीड. दैट्स माय स्टोरी. आई फील दैट ऑलवेज इंस्पायर्स मी. That's very true, because as founders, no matter how hard we get hit, after a certain point, it's about time to get back on the horse, right? Take your time, go back, do whatever you need to do to take care of yourself, because you need to get back on the horse and come back and take care of your startup as well. Your team is still dependent on you, everything is still there. The world did not end because you had one very big failure or one some, like, I don't know, एक order pass नहीं हुआ, payment नहीं आया. It's okay, it's fine, ये होने ही वाला है, right? It is what it is, right? I want to take this journey a little bit different now, right? I want to make it, उस depression की बात हो गई, तो अभी थोड़ी सी happy creative space पे चलता है. Prototypes, right? MVPs and prototypes. बहुत सारे time, a lot of the people want to create the perfect product before actually going out. Now, obviously, again, we've been made aware, okay, don't do that, just cater to the needs, do the basic, bare minimum, test it out, validate it. But from a founder perspective, what I've seen is, इसमें दो चीजें हैं. Obviously, it is true that I should not wait too long to test my product out. There is no perfect product. I create the product, I go out, I test it out. Whatever my feedback comes, I come back, I reiterate it, and then I put it out there again. The second thing is, sales leads go cold over a period of time, right? Yeah. So, if I come to you, tell you that, hey, this is my product, please try it out. You will test it out for me once out of your kindness, twice because you already tried it once. By third time, you're like, listen,
I have someone who's already catering to my needs and wants and is more aligned with me. I don't want to entertain you anymore, right? Or you yourself lose that confidence over a period of time. You have to realize that the first product is not going to be perfect. There will be problem. You will lose that confidence as you reiterate that product. But at the same time, you shouldn't just go extremely unprepared either. कि बाबा product basic needs भी नहीं create कर पा रहा है, right? So I want, from a SaaS model point of view, from a software perspective, or you even tried your hand at the hardware perspective with the cafe, the what do you call them, internet cafes, right? We used to have them back in the day. God knows what's happened to them now. So my internet's on the mobile, right, after Jio. Walk me through that journey. Now, okay, now maybe it's a different say, but even now you probably make a lot of products. Walk me through the journey of prototyping, testing, creating an MVP. When should you approach a customer for testing it out, and when should you not approach a customer to test it out, right? Walk me through that. So, like in my industry, it's very important to build with the customer. I will never say that you decide something on a drawing board, build and then take it to the customer. At least in the education vertical, we've learned it the hard way, because every industry, every university operates in its own way. I always have believed, like even in our next startup Gen Z deals, what we do is we build students with the Gen Z. We build product with the Gen Z by keeping them in and around the focus area, because sitting in office will never give you the right solution. You have to be on the field. You have to build either in public, which many startups are now doing, building in public, or building with the customer together, because lot of perspectives happen on field, lot of things happen in and around there, and those use cases are unfortunately never coming back to us as founders or product owners. We'll miss out those use cases. So I always believe MVP बहुत जरूरी है, but MVP with the customer in mind and using it rather than building something and taking it back to them. Build together with them. ठीक है, be it one customer, two customer, 10 customers, because then they will also have the confidence. Second, they will have the validation कि यार मैंने जो बोला वही उसने बनाया है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये चलेगा, तो वो और ट्राई देगा, आपको बोलेगा नहीं यार 3 टाइम 4 टाइम मैं करूंगा, यू हैव लिसन टू मी. आप खुद ज्ञानी बन के बाद में जाओगे ना फॉर डिप टेस्ट एनालिसिस या डिपस्टिक एनालिसिस, मोर और लेस इट वोंट वर्क, बिकॉज़ द कस्टमर विल फील ठीक है, आप किसी को पूछ के आए या आपने कोई डोमेन एक्सपर्ट हायर कर लिया, देन शो इट टू द डोमेन एक्सपर्ट, व्हाई आर यू कमिंग बैक टू मी. तो स्पेशली इन द SaaS वर्ल्ड, I always feel, which even many people now build in public whom they do, SaaS में बहुत build in public हो रहा है, जहाँ पे एक छोटा प्रोडक्ट बना के वो हार छोड़ देते हैं, लोगों का व्यूज लेते हैं, देन उसको इम्प्रोवाइज करते हैं, देन बोलते हैं अब ये मेरा सेकंड रिलीज है, मेरा थर्ड रिलीज है. Especially in the AI world, you look at Manos AI, they are building in public. Okay, you look at Fay.work is an AI by our Indian students in Stanford. They are also building in public. They do their releases in public. They take feedback, modify. Even somebody like Perplexity, Arvind Srinivas, keeps on asking, do I show ticker? Do I show scores on Perplexity? Should I remove this? Should I add this UI layer? तो build in public बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, especially if you ask to the right kind of audience. And I still feel, don't do MVP without the customer. Always do MVP with the customer. Do the survey. You have to burn the midnight oil. You have to be in the thick of things. So if you have a SaaS solution, say you are building SaaS for automobile, be with that automobile reseller. You have to be there, work with him, build, show, validate. Don't make something and go to them for feedback, because it won't work, because many use cases they will not tell you until you build it together with them. And but this is very important, मतलब you can't run surveys and build products in today's AI centric world or automated world. You can't run surveys. You can't ask a parent, do you like your child? That he'll say, of course I like. You can't ask a parent. I know so many startups जो surveys run करता है कि do you want to save money? Of course he wants to save money. Do you want to save money for your children? No, everybody will say yes. Who will say no? Tell me. Will I say I don't want to save money for my child? Right? So वो नहीं चलेगा. To be honest, आज के वर्ल्ड में आपको लोगों के साथ बैठ के बनाना पड़ेगा, कस्टमर को सेंटर ऑफ द सोल्यूशन रखना पड़ेगा, उसके अराउंड बना के उसको पार्टी बना के देन आप MVP स्टेज पे जाओ, तो इट्स मच बेटर. वी वर्क विद द Gen Z. I have learned it the hard way. I have learned it the hard way by building with Gen Z for 2 long years. Now it's our third year, which will start from September, and we've learned it के इनके साथ अगर आप
बन के नहीं चला के नहीं बनाओगे ना, तो एक्चुअली आपका प्रोडक्ट कुछ और करेगा और नीड कुछ और होगी। तो दे हैव टू बी द सेंटर ऑफ योर यूनिवर्स, दैट्स द ओनली वे टू। Completely agree with you, but there's another segment to it is where the business model that you create for them, right? Like you said rightfully starting में, इंडिया में हमें सॉफ्टवेयर फ्री में ही चाहिए, या तो ओपर सोर्स वाला लेंगे या तो आई डोंट नो क्रैक वर्जन लेंगे, आई डोंट नो द टर्म्स नाउ, बट समथिंग पायरेटेड और some XYZ version of it which comes for free, right? Said, for a SaaS company, that is that's even more difficult now to create a business model where they even make some money out of it. Or, and especially like in B2B case, at least I have an invoice given to a registered customer. In a B2C model, if I'm creating something for, let's say, just general public, let's say food delivery app or XYZ app, it has become very complex for me to create a model which will even break even. Uh, how do you think a person trying to build a SaaS company in B2B space and B2C space address the business model problem where he can at least break even from the start? Because I am completely against with the formula कि भाई इन्वेस्टर से पैसा लो, बर्न करो, कस्टमर लो, एंड धंधा नहीं बन रहा है वहां पर, वो एक साथ चलेगा आज के और इससे हो जाए. So what do you advise to these students building it to these two segments, B2B और B2C, SaaS का business model कैसे बनाए? सी, दोनों केस में पैसे तो बनाने पड़ेंगे, एंड आई ऑलवेज फील यू कैन स्टार्ट स्मॉल बट डोंट सेल समथिंग फॉर फ्री. ओके, like in our case we charge the bank but the customer knows I earn from the bank, it's not free. So फ्री में होता वो है ना कि फिर वो आदत लग जाती है, जैसा यूपीआई में हमको आदत लग गई, अब यूपीआई पे अब 10 पैसे भी आएगा तो बच्चा खड़ा हो जाएगा, पेरेंट खड़ा हो जाएगा, क्यों चार्ज हो रहा है. So I'm not saying it's the wrong model or a bad model, but for a startup that's not a good model in today's world. So charge less, charge 1 rupee, but charge from the beginning, because that habit has to be cultivated and you also need to validate the stickiness. Okay, so in a B2C space, like when we operate Gen Z deals, what we do is I don't charge a platform fee, but I charge the brand. Okay, so for example, if on Gen Z deals there is a brand which is running, like from tomorrow we are starting an exclusive deal for new age mobile from Alcatel. We're going to sell on Flipkart at an exclusive discount through our platform, but still I am charging the brand to list, to run this on conversion, because वो फ्री का आदत एक बार लग जाएगा ना तो कभी भी आप पैसे नहीं बना सकोगे. तो छोटे बनाओ, कम बनाओ, but start charging from day one. So it could be a platform fee, it could be a branding fee, it could be a listing fee, it could be advertising, no qualms. Okay, but some way B2C space में also you have to charge. अगर आप देखो Amazon अगर 5 रुपए चार्ज करता है प्लेटफॉर्म फी, जो पहले नहीं करता था, they also started charging platform fee. Zomato started charging delivery, search, Zepto started charging, everybody started charging, because like you rightly said, there is a limited capability of an investor to burn. And eventually, if you want to build a business, sustainable business, you can't survive on investor money. Okay, investor money can be growth, not for burn. तो बॉटम लाइन इज कहीं ना कुछ चार्ज आपको पहले से रखना पड़ेगा. अगर आप सोचो कि पहले मैं फ्री रखूंगा बाद में चार्ज करूंगा ना, वो बाद में कभी नहीं आएगा. चैट जीपीटी इज फेसिंग दैट चैलेंज टुडे. ओके, देयर पेड कन्वर्जन आर ओनली 8% compared to 88%, 92% who are using it for free. And now there is so much competition कि 8% को बढ़ाने के लिए बहुत दिक्कत है उनको, right? So although they have a lot of additional features, but to increase or migrate that to paid is difficult, right? So everybody has their own thing, but I always come from the fact that something or the other you monetize from the beginning. Otherwise, they'll be habituated for free. Unless your product can be monetized some other way, like my product to the university is free, but I'm sure to earn from the bank. Otherwise, I won't sell. If you're sure about that category, it's fine. You can sell to the end customer for free, monetize somewhere else. In the B2C, B2B space, it's more tricky because you will be always compared to your competitor, right? So you have to always tune your facility or process to how a competitor works. So if a competitor is charging on a per month, per user, per quarterly basis, you will somehow have to play in that fraternity, because although you are a competitor, that is how the industry thinks, right? So you can't go and say Tally free दे रहा है तो मैं free नहीं दूंगा. अगर Tally free दे रहा है तो आपको भी initially free ही देना पड़ेगा.
फिर आपका एक यूजर बेस बन रहा है, देन देयर इज अ वे कि यू कैन स्टार्ट कैपिटलाइजिंग, स्टार्ट चार्जिंग, स्टार्ट डूइंग समथिंग, राइट? तो Zoho आइडियल यूज केस है, उसका बेस सीआरएम फ्री है, but once you are more than 10 users, they start charging you, right? That's how Salesforce works. That's how the industry works. They have stuck to that, scaled up, got more customers, started charging. तो B2B में ना आप इंडस्ट्री चेंज नहीं कर सकोगे, बट B2C में विथ योर सर्विसेज यू हैव स्कोप ऑफ दैट प्ले अराउंड, यू हैव दैट प्ले रूम फॉर यू, वर्क अराउंड फॉर यू, कि मेरा थोड़ा अलग है तो मैं ऐसे नहीं ऐसे चार्ज करूंगा, वो फ्रीडम है। बट टोटली फ्री सिर्फ बर्न वाला मॉडल सस्टेनेबल नहीं रहेगा। कस्टमर्स को भी आज ये समझता है। देखो 2 साल पहले ना लोग प्लेटफॉर्म फी नहीं देते थे, ओके? 2 साल पहले अगर पेमेंट गेटवे चार्ज भी लगता था तो लोग बवाल करते थे। आज आप देखो, even Paytm for doing a mobile recharge, they charge you 1 rupee and people pay that 1 rupee, right? So आज बहुत अलग इंडस्ट्री है, लोगों को समझता है कि खर्चा है, कॉस्ट है, तो छोटा मोटा चार्ज होगा। As long as they are getting the convenience out ना, not at a very big bill, people are okay in B2C. They are willing to pay, but they should not be like paying too much or you know from where I'm coming. B2B में you have to play with the competition. You can't, मतलब गंगा ओवरनाइट चेंज नहीं होगी, फ्लो ओवरनाइट चेंज नहीं होगा, जैसे हो रहा है ऐसे करो, बट always charge from the beginning. Don't say 30 days free then I charge, you will lose all your customers. It has never worked for me. पहले free फिर charge, it has never worked for me because the problem is there is always competition there. Okay, या आप ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाओ जिसके ऐसा कोई कंपटीशन ही नहीं है तो अलग स्टोरी है, बट इफ यू आर प्लेइंग विद द सेम थिंग लाइक फूड डिलीवरी, okay, you can't keep it totally perpetually free or 30-day free and then you think they will charge, they will come back, they won't come back, you lose that customer. उससे अच्छा कम चार्ज करो, उससे अच्छा चार्ज करके कैशबैक दो। ये वाली स्टोरी भी मेरे में अच्छी चली है। तो मैं क्या करता हूँ, कहीं कहीं आई रन एट नो प्रॉफिट, स्पेशली इन जेनजी डील्स, I charge the brands, but what money I am making, I pass it to the consumer. So I am at no profit, no loss. That's also still okay. Brands accept, customers, even investors accept. क्या पैसा लेके वापस दे रहा हो, रॉबिनहुड बन रहे हो, चलेगा, आप कभी रिटेन कर सकोगे। बट बिल्कुल नहीं लेना ना, इज लाइक यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेव। लेके दो, कैशबैक दो, कोई और फैसिलिटी दो, एक्सटेंड कर दो। ऐसा भी हम करते थे, 8 मंथ का रेंट लेके 12 मंथ दे देते थे, ओके, सैस में। तो हम डबल दे देते, आप यू पे फॉर द ईयर, गेट 1 year फ्री, दैट्स फाइन, एज लॉन्ग एज द रेवेन्यू इज फ्लोइंग, यू हैव अ वे टू वर्क अराउंड। द इन्वेस्टर विल आल्सो बैक यू कि नहीं, ये पैसे लेके दे रहा है, ठीक है, बर्न हो रहा है बट पैसे मिल रहे हैं, जीरो नहीं है, पूरा बोल नहीं है, पूरा फ्री नहीं है। फिगर आउट वे, बट दोनों में चार्ज तो करो, डोंट कीप इट फ्री, डोंट वर्क यार। सो अगेन हियर यू हैव टू डू बैकवर्ड कैलकुलेशन। यू कांट से कि मैंने इसको 10 लाख में बनाया तो मुझे 10 कस्टमरों में 10 लाख चाहिए, ऐसा लॉजिक नहीं चलेगा। बट the way you have to start playing around this is with your average ticket consumption and secondly your runway. तो I always feel कि अगर हम बिजनेस चला रहे तो मुझे सैलरी, मुझे खर्चे के लिए पैसे चाहिए, भले मैंने प्रोडक्ट बनाने में जो भी डाले, इन्वेस्टर के पैसे भी डाले, आगे बिजनेस चलाने में मुझे 6 मंथ का रनवे इज शुड बी माय फर्स्ट गोल। तो अगर मुझे 6 मंथ का रनवे चाहिए, उसके लिए मुझे क्या प्राइसिंग करना होगा, ओके, ताकि मैं 6 मंथ सर्वाइव करूं, प्रॉफिट लॉस तो छोड़ दो, ये आपका पहला थंब रूल होना चाहिए। तो अगर आप B2C स्पेस पे प्ले कर रहे हो, जहाँ पे फूड डिलीवरी ऐप है आपकी, और आप जोमेटो से या स्विगी से कम्पीट कर रहे हो, डजेंट मैटर, वो चार्ज कर रहा है नहीं कर रहा है, डजेंट मैटर, मुझे 6 मंथ इसको चलाने के लिए कितने पैसे लगेंगे, इसको मैं ब्रेक डाउन कैसे कर सकता हूँ इन पर यूजर कैपेबिलिटी या MVP स्टेज, या मैं पर यूजर मैट्रिक्स पे आ जाओ, कंजम्पशन मैट्रिक्स पे आ जाओ, मैं एटलीस्ट 6 मंथ सर्वाइव हो जाऊं। बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप 6 मंथ सर्वाइव होगे ना तो आप 1 साल भी हो जाओगे, बिकॉज बहुत सारे लोग चले जाएंगे, बहुत कंज्यूमर्स आ जाएंगे, और बहुत सारे लोग, अगर प्रोडक्ट में वैल्यू है तो पैसे देने को भी रेडी हो जाएंगे, राइट? तो लाइक लिविंग अनदर डे, हम ऑलवेज स्टार्टअप वर्ल्ड में बोलते हैं व्हाट मैटर्स इज आर यू अलाइव टुमारो। तो वी कीप ऑन सेइंग विद इन अ फाउंडर्स ग्रुप, जहाँ पे बहुत बकचोदी होती है कि भाई don't die tonight, okay, don't die tonight, stay alive tomorrow, because you never know what brings tomorrow for you. I always go back to the drawing board in that sense ke for us to survive for 6 months, if you charge 5 rupees for this transaction or 5 rupees for consumption, will it help us survive for the next 6 months? If it does that, do that, because then you might get more ideas, good customers, better products. You never know what happens in 6 months, right? Yeah, और टाइम बच रहा है, उनके एफर्ट कम हो रहे हैं, तो देंगे पैसे, ऐसा नहीं देंगे। बट सी प्रॉब्लम व्हाट आई सी विद किड्स इज दे आइदर चार्ज एक्सॉर्बिटेंट फ्रॉम द बिगिनिंग के, भाई इसका तो 1000 रुपया मिलना चाहिए। लाइक I know so many apps which are listed on Gen Z Deals who are into fashion. बीच में एक बहुत बड़ा फैड था कि आप ऐप डाउनलोड करो, ये कपड़े का फोटो लो और आपका फोटो के साथ वो कपड़ा दिखेगा, तो देन यू कैन अंडरस्टैंड हाउ गुड और बैड यू लुक।
गूगल ने एक शॉट में इस इंडस्ट्री को मार दिया. गूगल लेंस है, सो मेनी अदर प्रोडक्ट्स हैव कम इन विद these large players. Amazon has, Google has, Microsoft has. It killed this industry. But there were so many startups who start say, no, 1,000 rupees you pay, and you can go to any mall, take photo of any clothes, and it will show you how you look. Now, although this is good to have, this is not something which every person will pay you for, right? This only those kind of Gen Z or the elite will pay who just want to play around, and there's no guarantee they'll come back for the next month, right? To do this, this has to be free. This can't be chargeable. But then you have to monetize around other things like bringing in more brands to your platform or charging on advertising. That's how you'll have to earn, right? So for you to understand who will pay is also very important. Is it the brand paying? Is it the consumer paying? Is it the data paying? Is it advertisers paying? Right? ये एक अंडरस्टैंडिंग भी बहुत सारे स्टार्टअप में देख रहा हूँ मिसिंग है, राइट. सेकेंड थिंग, मैं मेरा सबसे बड़ा लर्निंग इसमें कि सबको बहुत बड़े बहुत जल्दी बन जाना है. तो सबको ऐसा है कि मल्टीप्लायर हो जाएगा. इस मंथ उसने 1,000 दिए, नेक्स्ट मंथ 2,000 देगा, 12 मंथ पे 24,000 देगा, दिस विल फ्लाई. एक्सेल के जैसा नहीं चल रही है. ये सोचते हो कि 2 मंथ में और 4 कॉम्पिटिटर आ जाएंगे जो आप बना रहे हो, बना के जो फ्री में बेचेंगे और आप मर जाओगे, या एक हैवी कंपनी आ जाएगा जो फंडेड है, जो मार्केट तोड़ देगा इसमें, right? तो ये लोग बच्चे नहीं समझते, और वो एक मैथमेटिक्स प्रिंसिपल स्टार्टअप वर्ल्ड में नहीं चलता है. क्योंकि यहाँ पे हमको जो लगता है चलेगा वो नहीं चलेगा. हमारा डेली का एक्सपीरियंस है. लाइक माय बिगेस्ट सेलर प्रोडक्ट टुडे ऑन जेनजी डील इज शेयर्ड डील्स, शेयर्ड सब्सक्रिप्शन, वेयर आई सॉल्व अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम कि नेटफ्लिक्स प्रीमियम बच्चे को नहीं परवड़ता है, बट 4 बच्चों में शेयर करोगे तो बच्चा नेटफ्लिक्स प्रीमियम के पैसे देता है. हम ये बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करें. ये जब हमने सोचा था, मैं बोला था बकवास है, बंद कर इसको, ये नहीं चलेगा. और ये आज मेरा हाईएस्ट ग्रॉस मार्जिन प्रोडक्ट, जो बड़ी शर्मनाक चीज है कि वो मेरे पास रिटर्न एविडेंस है. मैंने लोगों को लिखा था बकवास नहीं चलेगा, कभी भी मत करो लाइव. जो हमने ट्रायल बेस में हॉस्टल में चलाया, जो चल गया. तो अंटिल यू डू दैट एनालिसिस डिपस्टिक, यू नेवर नो. मुझे था रिचार्ज कोई हमारे प्लेटफॉर्म से आके नहीं करेगा, बिकॉज इतने रिचार्ज प्लेटफॉर्म है. अगर आप देखो तो मेरा सबसे बड़ा हुक आज प्लेटफॉर्म पे रिचार्ज है, बिकॉज मैं वो 1 रुपया चार्ज नहीं कर रहा हूँ जो पेटीएम कर रहा है, दूसरे लोग कर रहे हैं. क्योंकि मुझे ऐसा है कि रिचार्ज के लिए बच्चा आके दूसरी 4 चीज देखता है, उसको पता चलता है, और वो और 5 फ्रेंड्स को बोलता है भाई यहाँ पे नेटफ्लिक्स शेयर मिल रहा है, तेरे को लेना है क्या. और ऐसे मुझे बिजनेस आ रहा है. तो मेरी जो एनालिसिस थी पीपीटी में, डेक में, प्रेजेंटेशन, इन्वेस्टर्स को, वो सब बकवास थी. क्योंकि जो चला वो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि रिचार्ज के लिए लोग जेनजी डील्स में जो हो रहा है, राइट. सो इन द एंड इट्स द मार्केट फर्स्ट. ऑनेस्टली 2 years बैक हमको भी नहीं पता था हम ये करेंगे. हाउ इट ऑल स्टार्टेड वाज वी वर डिजिटाइजिंग यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस. तो बहुत पेरेंट्स हमको अप्रोच करते थे, स्पेशली टीयर 2 टीयर 3 में, फार्मर के बच्चे, बिकॉज हमने बहुत एग्री यूनिवर्सिटीज करी, वेटनरी करी. फार्मर के बच्चे बोलते हैं सर हमको लोन लेना है, कहाँ से ले बच्चे के लिए. तो हम बोलते हैं यार हमको क्या पता, मतलब मैं थोड़ी एनबीएफसी हूँ. तो बोलते नहीं नहीं सर, आपके पास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, आप गाइड कर. तो एक लर्निंग होने लगा. बहुत बच्चे अप्रोच करते हैं सर स्कॉलरशिप कहाँ से ले. तो हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी को पूछो. बोलते सर यूनिवर्सिटी का तो कुछ नॉलेज नहीं. बोलता है आप गवर्नमेंट के पोर्टल के पास जाके देखो. बहुत बच्चे हमको पूछते थे सर हमको बाहर जाके पढ़ना है, ठीक है, किसको काउंसलिंग के लिए किसको बात करें. और फैकल्टीज हमको बोलती थी कि यू हैव अ SaaS प्लेटफॉर्म, व्हाई डोंट यू ऐड समथिंग फॉर मेंटल हेल्थ. सर हाउ विल इट हेल्प? नो कंटेंट ऑन मेंटल हेल्थ, स्टूडेंट शुड नो, देयर आर सो मेनी सुसाइड्स हैपनिंग, व्हाई डोंट यू ऐड कंटेंट ऑन मेंटल हेल्थ, राइट. ऐसे हमको रिक्वेस्ट आती फैकल्टीज की भी. फैकल्टीज बोलते थे हमको 2 यूनिवर्सिटी कनेक्ट क्यों नहीं कर देते हो आप. तो मतलब अकोला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बोलती थी कि एंग्रू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है आंध्र प्रदेश में, हमारे कंटेंट हमको शेयर करने, तुम तुम्हारे प्लेटफॉर्म से शेयर क्यों नहीं कर. तो जब ऐसी रिक्वेस्ट आने लगी, हम सोचने लगे कि यार हम एक अलग से एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहां पे हम 2 ही चीज करेंगे. एक एग्रीगेशन, कंटेंट अवेलेबल है डाल दो, डील अवेलेबल है दिखाओ, कोई एक प्रोडक्ट बेच रहा है जो बच्चे या फैकल्टी को चाहिए तो वो चढ़ा दो, और देखो एक्सपोजर मिल रहा है कि नहीं, कंजम्पशन आ रहा है कि नहीं. अगर आएगा तो विल फिगर आउट व्हाट टू डू. तो ऑनेस्टली दिस स्टार्टेड एज एन ऑफशूट ऑफ iWeb Techno, बट इवेंचुअली वी कन्वर्टेड इनटू अ सेपरेट कंपनी, बिकॉज ये एक B2C प्ले था, iWeb Techno B2B प्ले था. Secondly, investors were very picky because then some of the founders were divided. Now, you were hired to run iWeb Techno, but you are going to do something else. Why don't we build a separate team? So then 4 founders said, lucky, big family tha, 2 are doing iWeb Techno, 2 started doing Gen Z deals. Our only aim was to solve the problem of aggregation of deals, because आज बच्चे को पेरेंट को नहीं पता है स्कॉलरशिप के लिए कहाँ जाओ, लोन के लिए कहाँ जाओ, मुझे बाहर जाके पढ़ना है तो एमएस के लिए किसको कंसल्ट करूं, ठीक है, मेंटल हेल्थ नीडेड है, कहाँ जाऊं, क्या देखूं, नहीं पता है. ओके, बट अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे मैं मेंटल हेल्थ के वेंडर्स और कंटेंट को भी लेके आऊं, स्कॉलरशिप भी लेके आऊं,
स्मॉल टिकट लोन्स भी लेके आओ, हायर एजुकेशन काउंसलिंग भी लेके आओ, जो स्पेसिफिक टू स्टूडेंट्स है. तो आई एम सॉल्विंग वन प्रॉब्लम ऑफ one platform doing all of this. It's just aggregation for students because platforms exist, but aggregation for student, faculty, Gen Z doesn't exist, right? So Zomato has deals for everybody. You are a student, you will have deal. Ease My Trip runs deals for students, but students don't know it runs deals for students because Ease My Trip is for everybody. Exigo had this ideal use case. Actually, we started this because we listed Exigo also on the platform. The Exigo ka use case was that they were going to list and they said, we are going to list, but we don't have Gen Z consumers. Can you help us penetrate to students? I said, I don't know, but I will bring 100 students on the platform. You ask this. And we started doing, uh, which we call insights for the brands, where we called the students because we work with students. We said, Exigo है, उसको समझना है आप कैसे उसके ऐप को यूज करोगे. बच्चों ने क्लियर बोला आप डील देते हो ठीक है बट वन टाइम देते हो. दूसरा आप रिटर्न एयरफेयर पे कभी डील नहीं देते हो. आप 1,000 रुपए ऑफ दे देते हो. मुझे जाने की फ्लाइट पे 1,000 ऑफ मिल गया, आने का क्या करूं, पापा कभी नहीं देंगे पैसे. अब आने पे 1,000 तो मैं पापा को बोलूंगा सर पापा टू एंड फ्रो है 2,000, तो यार मेरे बच रहे 4 दिन बच रहे, बिहार का बच्चा बोलेगा सब जाने दो, तो मिल जाएगा. तो ये इनसाइट जब ब्रांड को मिलने लगी ना, ब्रांड स्टार्टेड कमिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म. दे सेड नो वी आल्सो गेट इनसाइट्स, we understand the problem and we run very focused, right? So all we do is aggregation of deals focused on students. Anybody, so today my pitch is to any brand who wants to sell something to a college, university, student or Gen Z, you can list on the platform. We don't charge to list. We only charge on conversion. We are mindful, we understand that a startup will not come and list because why will they come and list until they see conversion? So we have everything related to conversion. Second, our pitch is very upfront that how will we run this forward, right? Why will a college do or why will a college keep us in their vicinity? They will only keep us if you have very focused way of selling. So if I do scholarship, a college will say नहीं यार स्कॉलरशिप भी मिलती है यहाँ पे, जो हमको नहीं पता कहाँ पे मिलती है, तो जेनजी डील्स को प्रमोट करो, राइट? अगर लैंडिंग कर रहा हूँ तो बोलेगा हाँ यार लोन भी मिल रही है, हमको नहीं पता है कहाँ जाना है, एटलीस्ट बच्चे को थोड़ा वैल्यू एड मिल जाएगा. बच्चे क्यों आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे, बोलेगा एक ही जगह पे सब मिल रहा है, एक चैटबॉट है, इसको पूछ लो बेस्ट पिज्जा डील कहाँ है, तो पिज्जा की डील भी देगा, स्कॉलरशिप की डील भी देगा, एक ही जगह पे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है. बच्चे आलसी है, बच्चे 5 सेकंड रुकते प्लेटफॉर्म पे. अगर आप इंस्टाग्राम की रील भी देख लो, यूट्यूब भी देख लो, बच्चे की कॉन्सेंट्रेशन लेवल इज 4 और 5 सेकंड. 5 सेकंड में आपने क्लिक करा तो करा, वरना वो चेंज कर देगा, प्लेटफॉर्म बंद कर देगा आपका ऐप, वीडियो नहीं देगा, कंटेंट नहीं देगा, राइट? दैट्स ऑल वी डू. सो आई एम जस्ट डूइंग एन एग्रीगेशन. नाउ उसमें मैंने एआई लेयर ऐड किया बिकॉज लकीली जब मैंने शुरू किया एआई स्टार्ट हो रहा था, हमको कोई आइडिया नहीं था एआई का, बट हमने सोचा यूज करके देखते एआई से अगर एग्रीगेट कर सके डील, कुछ छांट सके, बच्चों का टाइम सेव कर सके, फैकल्टी को कुछ अच्छा मिल सके. दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड इंटीग्रेटिंग एंड वी इनबिल्ट एन एआई प्लेटफॉर्म. दैट्स हाउ genZdeals.ai came into picture. Again, my use case is I'm only solving the problem, aggregating deals, bringing in brand which a student doesn't know exist or doesn't have the time to search, and bringing a student audience to a brand like Exigo or many other brands who don't know what to sell because they never converse with us. देखो हॉस्टल के बच्चों से हम जब बात करते यही प्रॉब्लम है, सर 5,000 है, 5,000 को मैं मैक्सिमाइज कैसे करूं? ठीक है, तो मैं बोलता हूँ भाई इस प्लेटफॉर्म पे मैं तेरे को हिसाब दे सकता हूँ, 5 का 6,000 हो जाएगा, मतलब तेरे को 6,000 की डील 5,000 में मैं ला सकता हूँ. बी इट योर फूड, बी इट योर रेंट, बी इट योर रिचार्ज, बी इट योर क्यूआर पेमेंट, बी इट योर पीयर टू पीयर पेमेंट, हर एक ट्रांजैक्शन पे मैं 2% कैशबैक दे रहा हूँ. अगर तू जोड़ लेगा ये सब तो तेरा 6,000 का मैं 5,000 में करके दे रहा हूँ. दैट इज व्हाट आई एम डूइंग. Now, in this, a brand succeeds or brand is able to address to a student, get a new business, we earn something. In this, a student might explore something new, he might get a new idea. So I have so many now incubators talking to us saying, "Yaar, we have a Nidhi fund of 10 lakh rupees where I want students to come and apply. Why don't you enlist this student?" इस बहाने एक हमारा फॉर्म भर लेगा, हमको जेन्युइन बच्चे मिलेंगे, क्योंकि उनको जेन्युइन बच्चे भी नहीं मिलते, राइट? और छोटा मोटा प्रोटोटाइप बना लेगा, क्या पता 5-10 लाख मिल जाए. तो ऐसे वाला स्पेस भी एक्सप्लोर हो रहा है क्योंकि बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, राइट? तो इवन इंक्यूबेटर्स और इन्वेस्टर्स आर टॉकिंग टू अस फ्रॉम दिस एंगल. नाउ दिस वाज अ लर्निंग. मैं कभी नहीं सोचा था नीति एसएसएस एसएसपी वाला फंड यहाँ पे लिस्ट करेंगे बच्चों के लिए, हम कर रहे हैं बिकॉज इन द एंड द यूज केसेस, there is a demand, there is a consumer, but both of them don't know each other due to the bureaucracy. There are brands who want to go offline. So now Red Bull is talking to me because the Red Bull says मैं 500 कैंपस में हूँ और मेरे को अगर 5,000 कैंपस में जाना है तो क्या करूँ? तो आई एम बिल्डिंग अ नेटवर्क ऑल्सो फॉर देम.
okay, I am going to do something online, offline. Although this is not signed, this is just between us. But yes, we are talking to them because Red Bull says, I want to expand, I want to go exponentially big. I have a healthy drink, okay, not just that energy drink. I also have a healthy drink which is good on the tummy. I have a kombucha flavor coming up. I have kombucha drink guys talking to me कि आप कैंटीन में क्यों कोक पेप्सी बेच रहे हो और kombucha वही रेट पे मैं दूंगा, which is a healthy drink, which is good on the gut. Why don't you help us address or talk to canteens online and offline? That's what we'll do. So I will also do a hybrid model like we did with Aditya Birla, I did with Bank of Baroda during Kumbh Mela. I took Bank of Baroda to campuses offline. So the sky is the limit. I am only acting as an enabler where I am monetizing when they are monetizing. And it's a very new market which you are opening. And we are also learning, like you rightly said, I don't know what will work 1 year down the line. Will I be doing this, what I'm doing? Will I be earning from a student or a brand or a teacher or a counselor? Or I don't know. But as far as I am concerned, I am trying to solve a problem. I am helping students save money. एंड आई हैव मोर रूरल कंज्यूमर्स देन अर्बन कंज्यूमर विच इज गिविंग मी अ किक. तो मैं जब भारत को डील करता हूँ ना तो रोंगटे खड़े होते हैं कि यार कुछ तो कर रहे हो. मतलब एटलीस्ट अंडर सर्व्ड कम्युनिटी को 5 बच्चे को स्कॉलरशिप मिला है आज, तो मैं खुश हूँ. यार उसको मैं नहीं होता तो स्कॉलरशिप नहीं मिलता, क्या पता कल ये इलॉन मस्क बनेगा अपने देश का. तो दैट इज ड्राइविंग अस टू डू व्हाट वी डू इन जेन ज़ी. So the best thing is with so many academic incubators come in, like for Gen Z deals also we are incubated at IIT Lucknow. Because sorry, I am Lucknow because I am an alumni. I had done an MDP course from IIM. I studied out of Somaya, so Riddle as an incubator. The best part is for any student today, be it school or college, either in his or her college or maybe in the university, there will definitely be an incubation cell. Every government is very go on incubation and student founders, student startups. तो छोटा मोटा ग्रांट तो मिल जाएगा. मतलब अगर इफ यू आर परसिस्टेंट, यू मेड अ गुड पीओसी, एटलीस्ट एक पीपीटी भी होगा ना, छोटा मोटा ग्रांट तो मिल जाएगा. Always try going through that platform. मतलब the best way to approach is not go and pitch directly to VCs or angels. It won't work out. Because पहले बच्चे देख के वो खुद का ज्ञान देना शुरू कर देंगे. Because he or she will come from an ideology ना, तो सिखाने का तो सबसे ज्यादा पसंद है VC और angel. तो वो बोलेगा बैठे बैठ mentorship मैं equity ले लूंगा. Don't do that. Always go through an incubator or an accelerator which is incubated within the vicinity of a college, school, university. Because वहां पे बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स भी होते हैं. तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट वीसी पिचिंग. फैकल्टी विल एटलीस्ट वैलिडेट एंड गाइड यू. देयर आर लॉट ऑफ मेंटर्स हु आर like what you are doing is also guiding students, right? So there are so many experts and mentors linked to incubators who guide and help you scrutinize or spruce up your pitch, and then eventually you have a demo day. Dekho, all of these incubators keep a demo day where they call in VCs or angels, right? Where you pitch, you learn, and then go about in the actual world. So for any student, best way to deal today is try incubating in a college or a university which is close to where you operate. Even if it's not close, you can do it remotely also. Like I am incubated, I am Lucknow. I don't go to I am Lucknow, right? We do it remotely. Most incubators allow that remote. There are so many funds which are focused now on students. There's a startup fund only for students, right? तो वो भी है, but don't try doing this on your own because इसमें ना it's like sharks are around you. Until you swim through the full swimming pool, you will not know what to do. So if I was a student today, I would have also not known what to do. Go through your college or incubator cell. Always guidance will be better. Even if they don't spruce up you for the final pitch, you will still learn a lot of things. और इससे one will bring another. देखो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है? One will bring another. आप आज बैटिंग सीख जाओगे तो कल आप बैट पकड़ना भी सीख जाओगे. ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? फोकस ऑन द जर्नी, डोंट फोकस ऑन द एंड रिजल्ट. And we humans are very, very, very iterative. We are very, our cognitive skills are really good. Although we don't harp upon that, but cognitively ना human being एक बहुत intelligent being है. AI कुछ भी बोलो आपको नहीं बीट कर सकेगा. हम cognitively ऐसे evolve हो जाएंगे कि हम उसको भी बीट करने लगेंगे. तो I believe in the human caliber. तो ज्यादा मत सोचो, incubation में जाओ, सीखो, be inquisitive, learn from everything, and you will pick up. There is no rocket science in this. Last, I require something from you. A vertical for a competition is for incubation centers also. Because किसी ने आज तक एक incubation center को pitch करते नहीं देखा. मुझे Yes. नहीं पता एक नहीं देखा. exactly right. मुझे नहीं पता कि यार 5 एग्रीटेक इंक्यूबेशन सेंटर्स है, इसमें से अच्छा क्या है बुरा क्या है, इसमें से इसमें क्या फ़र्क क्या है.
और हेल्थ टेक और डीप टेक या कोई भी उसके अंदर है. So we are what we are hoping here is to actually have the first competition for incubation center. और सिर्फ incubation centers नहीं, कॉलेज के अंदर ई सेल्स होते हैं उनके लिए भी, और Yes. स्कूल्स के अंदर अटल टिंकरिंग लैब्स और उस तरह के जो Yes. सिमिलर है उन सब का Correct. मिला के एक फैसिलिटेशन सेंटर के लिए एक रखा हुआ है. should be there. Based on your experience, what is something that you would tell these guys they need to work on as a founder? Because as a founder, you have the other side of the coin. You've been at the Correct. receiving end. Where Correct. do you think these guys should improve, focus on, and where do you think they can provide a slightly better service if they just do this one small change? Biggest change what they should do is their CEO has to be an ex-founder. Okay, they can't have an academician leading that incubation cell. Doesn't work. We need somebody who has been there, done that, either who is an existing founder or has founded, sold, closed, whatever. But the CEO, the head running that incubation center has to be a founder. Because the founder's first mentality नहीं होगा ना तो solve नहीं कर सकेगा प्रॉब्लम. एक वो, दूसरा चीज एक्सपर्ट पैनल भी वो जो बिठाते हैं उसमें ज्यादा फाउंडर्स होने चाहिए, कम मेंटर्स, गाइडर, अकेडमिशियन वो कम होने चाहिए. तो मैंने भी बहुत पिच करा है और मैंने देखा है कि मैक्सिमम सेल में ना ये एडमिनिस्ट्रेटिव, अकेडमिशियन, डॉक्टर्स, पीएचडी होते हैं. ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम ना, धंधा ऐसे नहीं बनता है. ओके, धंधा तभी बनेगा जब सामने एक बंदा बैठा होगा जिसने धंधा करा है. तो गिव दिस अ ड्रास्टिक चेंज. आई वर्क विद से 10 ऑड इंक्यूबेटर्स, उसमें से 2 इंक्यूबेटर्स मुझे पता है जहाँ पे एक्चुअल फाउंडर्स चलाते हैं. ओके, एंड वन ऑफ देम वेयर आई एम इंक्यूबेटेड लाइक रिडल. The CEO Gaurang himself is a co-founder, sold off 3 companies, running 2 companies, so he understands the pain. So I'm not saying others are bad, but this is a very big change. It's like in cricket. Your coach doesn't know how to play. That's it. That's the end of story, right? Your coach has to be a player. If he's a player, he knows the pain of a player. He knows the good, the bad, the ugly, and he will focus on areas which an academician or administrator might not be able to, because he has never done that. I am not against them, but they've not seen that side of the coin, right? Now, if you tell me go and teach, I might give good gyan, but I might not be a good teacher because I've never taught, right? I have learned everything the hard way. So I always keep on telling my investors also that today we are small, we are 40, 50 people, but tomorrow if we are 100 people plus, please get in a professional CEO, because I have never run a company which is 100 people, right? I have 40 people reporting to me. Tomorrow, if I get 100 people reporting, I'll go mad. I'll end up in depression, right? So please get in a specialist, and which you see most of the large companies who've grown, right from Sun Microsystems to Flipkart to even Google, right? Sergi was running and the other guy was running, but once they crossed the limit, they got the ex-Sun CEO to come, and from 10 people to 100,000 people, he has scaled Google. It's not the founders, right? So I always believe get a specialist. So you're running an incubation center, you need an ex-founder. Same for venture capitalists, same for angel funds. Please keep somebody who has been there, done that, because वो जो right solution ला सकेगा, problems को solve कर सकेगा ना, वो जब तक आप journey नहीं meet करोगे आप नहीं कर सकोगे solve. I always feel, and this is a big missing thing. Most incubators don't have. They have consultants, but they're consultant. The guy running it has to be a founder. So it will make sense. I honestly feel they should change. No, thank you so much for a very, very honest and upfront answer to all my questions. I will conclude it because I know it's getting quite late even for you. And Or we can do part 3 if you feel it adds value. See, my kick is students, your kick is students, my kick is universities, colleges. Like I've been there, done that. That's the only thing I've been doing for years. Yeah. I can always continue whenever else you want, and even Sundays and all. I don't do anything great. I would like to add value wherever I can. This is a bigger kick for me. Thank you so much, and I'll be very honest with you. We wanted to have a 30-minute short call, and I wanted to experiment with the podcast model. Since you were my last call, so I did experiment with the podcast model here. Yeah. I think as a founder, it's better to apologize than to ask. 100%. So I am sorry for that. I know it's not right. So I do apologize for that. This is very close to my heart. And when you say you're going Yeah. to broadcast this and students are going to listen to Yeah. this, it's more the merrier, because like I always say, I always Yeah. keep on telling all of my friends also that even if you add value to one person's life, tomorrow you're there, not there, but if that one person is the game changer for your Yeah. nation, for your people, for your country, you never know, you would have
done such a big service that tomorrow you might have the next Elon Musk or the next Mahatma Gandhi or the next Shivaji. And if you guided that person, what else can you do? As a human being, what else you will carry? That's the only thing. Yeah. So That's true. That's that's my so true. sincere hope that we should be able to add light to somebody's life, and if we can change that life, we never know. No, that's true. So this entire initiative, we are partnered with AIU and AICTE, the university bodies. So we Very are nice. hoping we'll be reaching out to about 1,000 universities, and if nothing, at least 30-40,000 of colleges. Schools Brilliant. we are trying out, and let's see how many we are able to onboard, because it's quite difficult to cater to all bodies at the same time. We'd like maximum participation, but let's see how we go. We'd love to Absolutely. have you on board later on if any school or university would like to reach out, or if we have anything else in the future, we'll definitely reach out to you. My pleasure. And thanks guys for doing this. Both of you are also stuck till late from morning to evening. It's not easy. Oh, I started at 10 o'clock. I've been doing the same calls since 10 o'clock, so I'm happy. And I'm happy that you are running this initiative. They should have started much earlier, to be honest. And I hope you see fruition, you see growth. And see, there are founders who are willing to talk. Aisa nahi hai, they're not willing to Yeah. talk. They just don't Yeah. know where to go. They don't have the time. And they don't focus on this. So, like, you sent a simple mail, and I'm sure so many founders connected. Yeah. If we put in this more, at least बच्चों को guidance मिलेगा जो अभी नहीं मिल रहा है, और सच गाइडेंस मिलेगा. देखो, आप बड़ों से, जब सक्सेसफुल लोगों से सीखोगे ना, उससे ज्यादा आप छोटे लोगों से ज्यादा सीख सकोगे, बिकॉज रिलेटेबिलिटी ज्यादा होगी. आज यहाँ पे ऑफिस बंद करके मैं एक मेट्रो पकड़ने वाला हूँ, तो मुझे पता है मैं कितना रिलेटेबल हूँ, ना कि एक मर्सिडीज में बैठ के जा रहा हूँ. तो जो रिलेटेबिलिटी होती है ना बच्चों को, अगर वो मिलेगी ना, वो राइट एडवाइस मिलना बहुत जरूरी है. And वो right advice can propel. See, India is I am only selling to India still. I had lot of opportunities to export. Why am I not doing it? Because I know potential जो अपने country में वो कहीं भी नहीं है. And अगर इसको हम right channelize कर लेना, बस सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों की लाइफ बदल सकते हो. अगर आप channelize सही ढंग से करोगे तो sky is the limit. And that's my sincere. That's true. That's true. Anyway, thank you so much. Thank you for Yeah, having no us. problem. Thank you for waiting for such a long time. I My assume pleasure. you have people waiting for you as well. Yeah. I apologize to them as well. No Thank you. issue there. Thank you. Hope we do a good one. Thank you. Bye. Thank you. Bye.